या आंतरराष्ट्रीय बातम्यानंतर आपण काही इतर देशभरातील बातम्या बघूयात। तिरुपती बालाजी मंदिरातील लाडूमध्ये तुपाऐवजी जनावरांची चरबी वापरल्याचा दावा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी केलाय। चंद्रबाबू नायडू यांनी माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारवर गंभीर असा आरोप केलाय। चंद्रबाबू यांच्या आरोपानंतर आंध्र प्रदेशातील राजकारण चांगलंच तापलंय। जगनमोहन रेड्डी यांच्याकडून चंद्रबाबूंचा आरोप खोडून काढण्यात आलाय। चंद्रबाबू नायडू यांनी हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्याचा आरोप हा वायएसआर कडून करण्यात आलाय। भाविकांचा विश्वास दृढ करण्यासाठी मी आणि माझे कुटुंब तिरुमला प्रसादाच्या बाबतीत शपथ घेण्यास तयार आहोत। चंद्रबाबूही कुटुंबासह शपथ घेण्यास तयार आहेत का, असा सवाल जगनमोहन रेड्डी यांनी उपस्थित केलाय। కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది। నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం। నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం। అల్టిమేట్ గా వెంకటేశ్వర స్వామి మన రాష్ట్రంలో ఉండడం మనందరి అదృష్టం। तर चंद्रबाबूंचं वक्तव्य महत्त्वाचं आहे। आपण बघतोय आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांनी कबुली दिली आहे। तिरुपती मंदिर हे देशातलं सर्वात श्रीमंत देवस्थान आहे। जगभरातून तिरुपती बालाजीच्या दर्शनासाठी भाविक या ठिकाणी येत असतात। रोज 10,000 किलो तूप लाडू बनवण्यासाठी वापरलं जातं। नंदिनी नावाचं तूप आधी वापरलं जायचं, ते कर्नाटकचं होतं। जगन रेड्डींनी सत्तेवर येताच ते कॉन्ट्रॅक्ट एका प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरला दिलं। नव्या कॉन्ट्रॅक्टरनं तुपात प्राण्यांची चरबी वापरल्याचा आरोप हा चंद्रबाबू नायडू यांनी केलाय।